also I'm very thankful to all the monks, the nuns, and all our Buddhist leaders who are here. Now I request Honorable Minister to make his opening statement about the events of today and also events preceding today. जब ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सौभाग्य का सूर्य उदय हो रहा है, एक ऐसे भाव भरे क्षण में जब भारत की सनातन संस्कृति के मानबिंदु भगवान बुद्ध के स्मृति अवशेष 127 साल बाद लौटकर फिर अपनी धरती पर आए और हम सबको उनके स्वागत का सौभाग्य मिला है। ऐसे पवित्र अवसर पर आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र गोडरेज फाउंडेशन के आदरणीय श्री फिरोज शाह गोडरेज जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सम्माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित आईबीसी के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री अभिजीत हल्दर जी, भारत सरकार के मंच पर उपस्थित तीनों सम्मानित संयुक्त सचिव, कार्यक्रम में उपस्थित एएसआई के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री रावत साहब, एएसआई और भारत सरकार के अन्य अधिकारीगण, नेशनल म्यूजियम के सारे पदाधिकारी, इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए इस पवित्र अवसर के साक्षी बने और ये ऑली रिलिक्स भगवान बुद्धा के जब वापस लौट करके देश में आए, इस भाव भरे पल का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित इन अस्थि अवशेषों को, इन अवशेषों का चैंटिंग के द्वारा, मंत्रों के द्वारा स्वागत कर अभिमंत्रित करने वाले सारे ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उपस्थित पत्रकार मित्रों, साथियों, निश्चित रूप से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका संकल्प है कि हम विरासत का सम्मान करते हुए विकास करें, वो एक बार सिर्फ वाक्य से नहीं, कृतित्व से सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 2025 के इसी वर्ष के अप्रैल के महीने में ये ज्ञात हुआ था, जानकारी में आया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को नमन आहूजा जी ने एक पत्र लिख करके बताया था कि भगवान बुद्ध के स्मृति से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो अवशेष, जो जूल्स पिपरवाहा में, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में खुदाई में उस समय में अंग्रेजों के समय मिले थे 1898 में, और जो हिस्सा उस समय में तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उस एक्सकेवेशन को ऑर्गेनाइज करने वाले मिस्टर पेपे को दे दिया था, वो हिस्सा सॉथबीज के द्वारा हांगकांग में नीलाम हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमने उस पर काम करना शुरू किया। अभी विस्तार से आदरणीय विवेक जी उन सारे को पद स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम यहां तक पहुंचे उसके बारे में आप सबको ब्रीफ करेंगे। एकाएक लगता था कि 5 दिन बाद में, 4 दिन बाद में ये ऑप्शन होने वाला है, हम क्या और कैसे इस पे कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की महत्ता पूरे विश्व भर में स्थापित हुई है, उसके चलते हुए इतनी शीघ्रता के साथ, जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मुझे स्मरण आता है अभी कुछ ही दिनों पहले एक कार्यक्रम में अभिजीत हल्दर जी और हम सब लोग थे, सैकड़ों बुद्धिस्ट मॉन्क के उपस्थिति में आदरणीय अभिजीत हल्दर जी ने कहा था कि भगवान बुद्ध के इन अवशेषों को लेकर हम दिल्ली वापस लाने, भारत वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि ऐसे काम में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन शायद इसमें सफलता मिलेगी, पर मुझे लगता है कि हमारे प्रयासों से ज्यादा भगवान बुद्ध की पवित्र स्मृतियों और भगवान बुद्ध का पुण्य जो है वो वापस इन अवशेषों को अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए खींच रहा था।
और इसके चलते हुए हमारे प्रयासों में हमें साथ मिला गोदरेज फाउंडेशन के फिरोज शाह गोदरेज जी का। इन्होंने हमारे साथ में मिलकर के इन्होंने इन स्मृति अवशेषों को भारत में लाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मैं आदरणीय फिरोज शाह गोदरेज जी का, इनके पूरे परिवार का इस महती कार्य के लिए, जिसको लेकर के आज पूरे भारत भर के लाखों 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 बुद्धिस्ट जो भगवान बुद्ध को मानने वाले ऐसे लोग हैं, सीधे बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, ऐसे लोग तो निश्चित रूप से आज एक सुखद अनुभूति या सुखद एहसास से गुजर ही रहे होंगे। लेकिन भारत के इतिहास में, भारत के अतीत पर गौरव करने वाले करोड़ों भारतीय, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को मत के उपासक होंगे, चाहे वो किसी भी प्रार्थना विधि या किसी धर्म में दीक्षित होंगे, लेकिन उन सबको भी आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खुशी का एहसास हो रहा होगा जब हमारी ये पुरानी संपदा, हमारी ये स्मृतियां भगवान बुद्ध के परिवार ने, जब भगवान बुद्ध के अस्थियों को जब एक पत्थर के बक्से में रख करके, कैस्केट में रख करके जब उनको जमीन में स्मृति के लिए रखा होगा, वो जो है लगभग 2500 साल पुरानी संपदा जो है आज लौट करके हम सबके बीच में आई है। तो शायद ऐसा लगता था कि क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल में भारत से निकल करके ऐसी लाखों हमारी संपदाएं जो जिन पर हम गर्व कर सकते हैं वो भारत से चली गई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके लौटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। मैं मात्र आप सबकी जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 में जब देश ने आशीर्वाद देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सेवा के लिए चुना, उससे पहले केवल 13-14 ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आजादी से लेकर के भारत से गई हुई चीजें जो है वो वापस लौट करके भारत आई थी। आज वो संख्या 650 के लगभग पास पहुंच गई, और केवल पहुंची नहीं, हमने बहुत सारे देशों के साथ में इस तरह के CAPs साइन किए, अमेरिका के साथ में साइन किए, अन्य देशों के साथ में भी साइन किए, और भारत इस तरह से ले जाई गई इलीगल तरीके से ले जाई गई पुरातत्व संपदा, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो उसके देशवासियों का अधिकार है, उसकी स्मृतियों से जुड़ा हुआ उसकी कल्चरल प्रॉपर्टी है, वो वापस उस देश को मिलनी चाहिए। उसके ध्वजवाहक के रूप में, उसके फ्लैग बियरर के रूप में भारत की आवाज ने पूरे विश्व की आवाज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भारत इसमें एक नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभरा है। मैं इस अवसर पर फिरोज शाह गोदरेज जी का धन्यवाद करते हुए कल्चर मिनिस्ट्री की सारी टीम का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे याद आता है जिस दिन ये विषय संज्ञान में आया था, हमने इस पर काम करना शुरू किया था, तब आदरणीय विवेक अग्रवाल जी ने डिपार्टमेंट में शायद एक ही दिन पहले ज्वाइन किया, और पहले ही दिन हमारी पहली मुलाकात में मैंने उनको ये टास्क दिया, और मुझे उस दिन लगता था कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन जिस उत्साह के साथ में, जिस ऊर्जा के साथ में इन्होंने उसको वापस, जब मैंने इनको कहा कि ऐसा मुझे करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी इच्छा है, तो इन्होंने कहा सर प्रधानमंत्री जी का आदेश है और आपने कह दिया है तो हो ही जाएगा, भगवान बुद्ध लौट करके घर आएंगे, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और आज वो सुखद दिन, वो शुभ दिन आया है कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद में भी हमने डिप्लोमेटिक प्रयास किए, हमने दूसरी तरह से प्रयास किए, हमने लीगल डिस्कोर्स लिया, और आज ये शुभ दिन आया कि आज हम सब लोग भगवान बुद्ध के इन स्मृति अवशेषों का यहाँ भारत की भूमि पर स्वागत करने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। मैं सारी टीम को, ASI की सारी टीम को, मंत्रालय के सारी टीम को, जिन्होंने वहाँ जाकर के वार्ता की, जिन्होंने वहाँ चर्चा की, जिन्होंने वहाँ जाकर के इनको ऑथेंटिकेट किया, इस पूरे प्रयाण में, इस पूरे जो है प्रयास में जितने भी लोग सहभागी रहे, मीडिया के बंधुओं ने भी इसमें बहुत सकारात्मक भूमिका इनके संज्ञान में आने पर निभाई। मैं आप सबका हृदय पूर्वक इस अवसर पर धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आज का दिन मेरे जीवन के जो ऐसे अविस्मरणीय दिन होंगे, जो शायद मुझे जीवन पर्यंत मेरी स्मृति में रहेंगे, उनमें से एक आज का पवित्र दिन होगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आदरणीय फिरोज शाह
गॉडरेज जी का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, नमो बुद्धाय। Moving ahead with the program, we now turn to the presentation by Shri Vivek Agarwal, Secretary, Ministry of Culture. Honorable Union Minister for Culture, Shri Virendra Singh Shekhawat ji, my colleagues on the stage, the dais, Mr. Purusha Godrej, Reverend Nuns, my colleagues from Archaeological Survey of India, Director General Mr. Rawat, that we could today witness the return of Buddha's relics, Lord Buddha's relics which went away from this land in 1898. Today we are able to see them again on this land. This is not only a national heritage of India, it is actually the heritage of the entire Buddhist world, and it is, the onus is on India that we protect this heritage and we present this heritage to the entire Buddhist world in a way that the reverence is maintained and the faith goes higher and higher for all that Lord Buddha brought to us humans, us mortals in this world. So I'll go through the background, context and how this entire process was taken for achieving the success that has been achieved today. So as you, most of you would know the background of these relics. They were actually part of a stupa which was in today's Siddharthnagar district in Uttar Pradesh. It's called Piturva. It's called Piturva because there was an English gentleman called Mr. Pepe who was the estate manager of that area. And at that time, when the excavation happened in this stupa, these relics were found and they were actually, we were deprived of these relics at that point of time. So Piturva in the present day Uttar Pradesh is a sacred place, is a place where these relics were unearthed. Following the Mahanirvana at Kushinagar, the Lord Buddha's relics were divided in 8 parts. That is part of the history. And one part went to his own clan. That was the Sakyas. Because Lord Buddha belonged to the Sakya clan of that era. And the Sakyas, that 1/8 part of the Lord Buddha's relics, they were put in this stupa along with the offerings. So there is a big casket. In the casket there was one rock crystal container and there were other containers, and in those containers the relics of Lord Buddha along with the offerings of the Sakya clan were kept, and they were put in this stupa that you can see on the right side. Next. These relics, when the digging happened, Mr. Pepe at that time discovered these relics. They were taken out and a large part of that was given to the Indian Museum in Kolkata. So we have the casket, we have the containers in which these relics were kept at Kolkata in the Indian Museum. But there were also the parts of these relics were also the offerings in these containers, which were actually, part of it was taken away by Mr. William Flexton Pepe, of course with the approval of the then British government. But when the research was done and when scholars understood the relevance and the importance of these relics and the identification happened. Next, there was also a study of the container in which these relics were found, and there is an inscription in Brahmi on this container. It's a rock cut container in which the relics were found,
The inscription in Brahmi script it says this is a deposit of the relics of the Buddha, the august one, by the Sakyas, the brethren of the distinguished one, with their sisters, children, and wives. So this is a clear historical evidence of the importance and the antiquity of these relics. Next. Also, part of the relics, which were part of the offerings, and they were taken out in 1899. A large part of them are still in the Indian Museum at Calcutta, and a large part of that was taken away by Mr. W.C. Pepe. He was allowed to retain that as part of a treasure trove that was found, and he took it away to England. Once India became independent, these relics went to India, and in his possession ultimately they got inherited by his great grandson. His name is Chris Pepe, who was the current custodian of these relics. Next. So these relics are actually shown in various exhibitions across the world, including the Met in USA, and there was a exhibition curated which was called Trees and Serpents, in which these relics were shown. But then finally they were put on auction by the Pepe family, and 7th of May was fixed as the date of auction at Sotheby's in Hong Kong. So the relics were brought from USA to Hong Kong, and they fixed this for auction in Hong Kong. That's when the Archaeological Survey of India came to know about it, and ASI and Ministry of Culture wrote a letter to Ministry of External Affairs for starting a process to stop this auction. So MEA started a diplomatic effort. Chris Pepe actually went for the sale, and the entire Buddhist world, including people who know history in India, they were highly disturbed when they came to know that the holy relics have been put on auction by Sotheby's in Hong Kong. Next. When Ministry of Culture came to know about it, Honorable Minister took it up at the instructions of Honorable Prime Minister, and we started working on diplomatic options to halt the auction. We approached the government of UK to intervene and stop the auction. At that point of time, their minister, the Secretary Culture of Government of UK, was also visiting India. Honorable Minister of Culture met her, Miss Nandi, Miss Lisa Nandi, and we made a formal request to her that Government of UK should intervene and these holy relics should be restored and they should not be allowed to be sold. But we had a lukewarm response from UK. They had their own legal compulsions, and finally UK wrote a letter to us. We received a letter from Ms. Nandi that says there are no legal grounds for intervention. Government of UK cannot intervene in this auction. But in the meantime, we knew that 7th of May is the auction date, and once auction happens, and if somebody gets hands onto these relics, then it will be very difficult for us to get them back. So we acted on our own at our level, and we took help. At that time, Professor Naman Ahuja came, we had a meeting, my own team sat, the ASI team sat, we put our heads together for so many years. So fortunately, the pressure that was built at that time, because once the notice was given, there was a huge media publicity of that notice, and the entire Buddhist world supported, including all the scholars in India and abroad, and a lot of buzz was created against this auction happening. And this international buzz emanating from India, emanating from Ministry of Culture, ultimately led to for the good sense to prevail, and Sotheby's finally, just 2 hours before the time of auction, notified us that they have decided not to go ahead with the auction, and the auction was stopped. So when the auction was stopped,
we started having an informal negotiation with them. Our motive was that we have to protect the relics, we have to protect the heritage without getting into any legal complication which would delay the process of such protection. So we were very open to negotiations, and I'm very happy to report, and I would like to place my appreciation on record, that when the negotiations started, we got a lot of positive response from the Pepe family as well as from Sotheby's, and they came forward for an amicable solution that can be reached so that we can have the restoration of these relics back to India. A philanthropist who is sitting with us, Mr. Firoz Shah Godrej, he stepped forward to facilitate the repatriation of these relics to India. So we started a three-way negotiation. Us from Government of India, Ministry of Culture, on one side Sotheby's and the Pepe family, and on the third side Mr. Firoz Shah Godrej. And this is an exemplary public-private partnership that has resulted in the success today. So we had taken a very clear stand that Government of India firmly believes that these are the relics of Lord Buddha and they cannot be subject of a sale or purchase. And Government of India cannot participate in any transaction of such nature. They are the property of the world, they are the heritage of the world, and they have to come back to India as such. So we did not participate in any negotiation on any compensation. This is between two private parties. We never asked the philanthropist also to disclose anything to us, but we signed an agreement with the Godrej Foundation and Godrej Group that the relics that will come back to India will be the asset of the country. They will not be alienated, they cannot be transferred to anybody else. They will remain, a large part of that, these relics will remain as a loan to Government of India. They will be, Government of India will have a right to have them available whenever there is an exhibition or an exposition or any religious occasion where we need them to be there as part of the relics exhibition. And in case Government of India wants to take them outside the country, as you would have known that Lord Buddha's relics, when they go out of the country for the devotees to come and worship, lately we went, the relics went to Vietnam. There were about 18 million Vietnamese people who came and paid their respects to the relics of Lord Buddha. Before that, relics went to Thailand. In near future, they are going to go to Sri Lanka as well as to Russia. There is a province in Russia which has large Buddhist following. So the entire effort of our country and of our leadership, Honorable Prime Minister and Honorable Culture Minister, is that the heritage of Lord Buddha is for the entire world. We are there as the custodians of this heritage, and we are there always to take this heritage to the followers around the world. So with this philosophy, we try to take these relics to various parts of the world. And now, with the completion of the relics, with the relics coming back and the original relics, it will become a larger set of relics which can go around the world for the devotees to actually come and worship and pray in the presence of Lord Buddha himself. Today. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. With this, we open the floor to the members of the press for the media interaction segment. Thank you. फॉर्मल एग्जीबिशन इसकी कोई डेट अनाउंस करेंगे जिसमें भारत में जो पहले से हमारे पास में भगवान बुद्ध के
ऐसे अवशेष जो हमारे पास में हैं, जो रिलिक्स हमारे पास में हैं, उन सब के साथ में एक अच्छा एग्जीबिशन करेंगे। अभी वर्तमान में विभाग के साथ विचार पर है, जब तक जैसा अभी माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि एक निश्चित अवधि के लिए भारत सरकार के बाद में है, उसके बाद में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो इनका जो बाद में म्यूजियम बनेगा, उस म्यूजियम में रहेगा। लेकिन जब कभी भी जहाँ जैसा एग्जीबिशन होगी उसके हिसाब से इनका डिस्प्ले। Because on those days, when the Britishers have given different things to different people. The bone relics were also given to the government of Siam at that on those days, and couple of more things were also given to them. But we cannot authenticate this that everything is with us now. Major part of that is with us now. Just to add to that, this is everything that the Pepe family has. So the entire collection that they have is public. Hello sir, Brenda from Hindustan Times. So I just want to know, is there any ballpark figure that we could get, how much was paid to Sadhis for the relics? And Not even I have not asked my friend Firoz that how much he has paid for that. To our minds, these are priceless cultural legacies. The idea was to bring this and have a celebration of India's cultural heritage coming home, a celebration that hopefully all of us in India and the global Buddhist community can participate in. These are obviously objects that have no monetary value in that sense, so we don't really want to get into any commercial details about it. I think it's a moment to celebrate again the cultural significance of इस धरोहर की अगर हम कीमत को रुपयों में बात करेंगे तो हम इसका भी सम्मान कर रहे हैं और अपने भी मन का छोटापन दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बाहर निकल करके ये अमूल्य धरोहर है, अमूल्य निधि है, लौट करके वापस हमारे देश में आए। Hello. And second part, I think some portion of the relics will still stay with the Godrej, right? So what happens? Formally, the relics are now formally on the land of Bharat and will remain as part of the cultural and religious heritage of Bharat. Hello, yes. Sir, my name is Naresh. I represent Sagar Media. My question is that the stupa of Piprava becomes a land, a place of worship for Buddhism. The stupa there will get some cultural tourism exposition so that the tourists can visit that place and pay their obeisance there, or they can pray there. So is there any, you are planning to make it a more place for the tourists to stay there? Monument of ASI, and increasing amenities on ASI monuments is a constant effort by the Ministry of Culture, and we'll continue to do that. Another thing is that when such major events happen and when such major relics come to the country, then the importance of the place also increases and the awareness increases for tourists to come. So as the flow of tourists and the visitors will increase, the amenities will also go up on the site. 1998 में जब relics हिंदुस्तान में मिले थे, पिछले 127 साल में या पिछले 100 साल में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से अधिकांश भूल गए थे कि कहाँ मिले थे। शायद पिपरवाह का नाम भी स्मृति से लोप हो गया था, लेकिन आज के इस सुखद दिन के बाद में पिपरवाह एक बार फिर जो है वो सारा पीछे का जो है विलोप हट करके और वापस एक बार फिर जो है वो चमकने लगा है। निश्चित रूप से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी।